Hey everybody, hello and welcome back to our channel Info Island. So guys, today we have an interesting topic to discuss with you guys, which is the list of managing directors, that is MD and CEO, which is Chief Executive Officers of multiple banks in India for the year 2023. So guys, this particular list that we are going to give you guys in this video is fully updated till the time of 2023, and these individuals that we are going to talk about, who are the MDs and CEO, which is the chief executive officers of these banks. So guys, these individuals, they play a very crucial role in shaping the banking sector and driving the growth of their respective institution, for which reason it is very important for all of us to know about these particular people and obviously the names of these important people. So guys, which certainly means that in today's video, we will be talking about banks, multiple banks and the people associated with them, be it like SBI, RBI, ICICI, HDFC Bank, Axis Bank or any other bank. So we will be covering all of those banks in today's video. So yes, let's get started. So guys, before moving into the video, let me just tell you what a बैंक इज. एक बैंक का मतलब होता क्या है, एक बैंक जो होता है वो होता क्या है. सो गाइज, बेसिकली अ बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट. तो सिंपल सी भाषा में देखा जाए तो वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है पब्लिक से और क्रिएट करती है एक डिमांड डिपॉजिट, वाइल साइमल्टेनियसली एज एन इसी दौरान वो लोन्स को भी बनाती है और लेंडिंग एक्टिविटीज जो होती है उस चीज को भी हैंडल करती है. तो ये जो लेंडिंग एक्टिविटीज होती हैं दैट कैन बी डायरेक्टली परफॉर्म्ड बाय द बैंक और इनडायरेक्टली थ्रू द कैपिटल मार्केट्स. तो ये फॉर्म आप कह सकते हैं, ये मतलब होता है एक बैंक का, वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है और लोन्स को लेंड करती है. मोटा मोटा भाषा में बोला जाए तो दिस इज अ पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ अ बैंक. Now let me just tell you what is the difference between a bank and a small finance bank. Guys, पहले जब बैंक आई थी हमारी कंट्री में, then their early stage में सिर्फ बैंक ही होती थी. Now there are different forms of bank, different kinds of bank. उस चीज को different different चीजों में divide कर दिया गया है and multiple names has been given for all of those banks. तो हम जानते हैं एक बैंक के बीच में और एक स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच में अंतर क्या होता है. तो पहले हम पर्टिकुलर्स में बात करेंगे, फिर हम आपको बैंक के बारे में बताएंगे और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बताएंगे. तो गाइज, अगर लोन की बात की जाए तो लोन जो होता है, जो कमर्शियल बैंक्स जो होती हैं, दे कैन ऑफर लोन्स टू ऑल द कस्टमर्स. तो वो जो होती हैं वो सारे कस्टमर्स को लोन ऑफर कर सकती हैं. लेकिन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स जो होती हैं, दे शुड ओनली प्रोवाइड 75% ऑफ द लोन्स टू द प्रायोरिटी सेक्टर. नेक्स्ट हम रेवेन्यू की बात करें तो जो कमर्शियल बैंक्स होती हैं, दे कैन अर्न रेवेन्यू बाय लोन्स एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस, जो कि वो लोग चार्ज करती हैं जिससे वो अपना पैसा बनाती हैं. जबकि जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, वो होता है बाय लेंडिंग सर्विसेज टू द टारगेट कस्टमर्स. ब्रांचेस की बात की जाए तो कमर्शियल बैंक्स जो होती हैं वो अपनी ब्रांचेस कहीं भी खोल सकती हैं कंट्री में. लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती हैं, इट शुड फोकस ऑन द रूरल एरियाज फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ एस्टेब्लिशमेंट. तो अपने काम को शुरू करने के 3 साल तक जो स्मॉल फाइनेंस बैंक होती हैं वो रूरल एरियाज में उनको फोकस रखना होता है. उसके बाद दे कैन एक्सटेंड देयर लेग्स टू द अर्बन एरियाज ऑल्सो. नाउ वी टॉक अबाउट हु कैन प्रमोट दीज बैंक्स. सो जो बैंक्स होती हैं उसको तो जो गाइडलाइंस इशू करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई, उसके हिसाब से चलना है. बाकी जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होती हैं उसको इंडिविजुअल्स हुए, प्रोफेशनल्स हुए, हु हैव अ 10 year ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंस, एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज और लोकल एरिया बैंक्स, वो सब प्रमोट कर सकते हैं. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट क्रेडिट कार्ड. तो क्रेडिट कार्ड बैंक्स इशू कर सकती हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी इशू कर सकती हैं. डेबिट कार्ड्स जो होते हैं, जो बैंक्स होती है, दे कैन इशू डेबिट एज वेल एज द एटीएम कार्ड. और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होती हैं, दे कैन ऑल्सो इशू डेबिट एज वेल एज द एटीएम कार्ड. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द टारगेट कस्टमर्स. तो जो बैंक्स होती हैं, दे आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनी रीजन. दे हैव देयर ब्रांचेस ओपन एवरीवेयर, दे हैव देयर टारगेट कस्टमर एवरीवेयर. लेकिन जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स होती हैं, उनके जो टारगेट कस्टमर है वो होती हैं एमएसएमई, स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल बिजनेसमैन, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स एक्सेट्रा.
Okay, guys, so that was all about the difference between the banks and the small finance banks. Now we will be talking about the difference between the public sector banks and the private sector banks. So guys, public sector banks का मतलब होता है the banks whose majority of stakes are held by the state, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसके पास मेजोरिटी स्टेक होता है, वो पब्लिक सेक्टर्स कहलाती है। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होती हैं वो बैंक्स होती हैं जिसका स्टेक्स जो है वो प्राइवेट कंपनीज ने सबसे ज्यादा ले रखा है या फिर पूरा ही का पूरा उन्होंने ले रखा है, और मे बी कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल होता है जिसके पास उसके स्टेक्स होते हैं, तो दे आर नोन एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। गवर्निंग एक्ट या फिर लॉ की बात की जाए तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं दे आर फॉर्म्ड बाय पासिंग एन एक्ट इन द पार्लियामेंट। ऑन दी अदर हैंड जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होती हैं दे आर रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनीज एक्ट। कंट्रोलिंग अथॉरिटी की बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर्स दीज आर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो होती हैं दीज आर कंट्रोल्ड बाय द कंपनीज और एन इंडिविजुअल। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए तो मोर देन 50% ऑफ द शेयर होल्डिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो होता है दैट लाइज इन द गवर्नमेंट, यानी कि स्टेट या फिर सेंट्रल। जो मेजोरिटी शेयर होल्डिंग होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का दैट लाइज विद द प्राइवेट कंपनीज और द इंडिविजुअल्स। नंबर ऑफ बैंक्स की बात की जाए तो देर आर 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स इन इंडिया बाय नाउ। ऑन द अदर हैंड देर आर 21 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स इन इंडिया बाय नाउ। रेगुलेटरी बॉडी की अगर हम बात करें सो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशूज रूल्स, रेगुलेशंस, गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस फॉर द पब्लिक सेक्टर बैंक्स अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934. On the other hand, the Reserve Bank of India issues the rules, regulations, guidelines, and directions for the private sector banks also. Customer base. The customer base of public sector banks is very high, and the customer base of private sector bank is somewhere there comparatively low with the comparison of the public sector banks, क्योंकि even today mostly जो जनता है, in fact mostly जो crowd है even today, in fact if I count myself also, then I also, there is a trust, there is a loyalty, you can say, based with the public sector banks because of the government thing involved in them. तो वो चीज है जिसके कारण there is a difference, and comparatively it is low for the private sector banks. इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स द इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग्स इज लेस एंड द इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स इज हाई। लेकिन जो प्राइवेट बैंक्स होती हैं वो इंटरेस्ट रेट ऑन सेविंग्स जो होती है उसको ज्यादा रखती हैं, और जो लोन्स होते हैं उस पर कम रखती हैं, जिससे कि दे कैन अट्रैक्ट कस्टमर्स। जॉब सिक्योरिटी की बात की जाए तो हाई जॉब सिक्योरिटी होता है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, लेस जॉब सिक्योरिटी होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। ट्रस्टवर्दी की बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स दे आर मोर ट्रस्टवर्दी देन द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एज दे आर गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स होती है बिकॉज दे आर नॉट गवर्न्ड बाय एनी गवर्नमेंट, दे आर गवर्न्ड बाय द इंडिविजुअल, तो इसीलिए वहां पर थोड़ा कम ट्रस्ट रहता है। अगला आता है शेयर इन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स दे होल्ड 72.9% ऑफ द टोटल मार्केट शेयर इन इंडियाज बैंकिंग सिस्टम। ऑन द अदर हैंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स दे होल्ड 19.7% ओनली ऑफ अ टोटल मार्केट शेयर इन द इंडियन बैंकिंग सिस्टम। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स दे अलाउ 20% एफडीआई। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो होते हैं दे प्रमोट एंड प्रोवाइड 74% एफडीआई only if there is no change in the control and management. Besides, according to the RBI regulation, a single organization or an individual cannot invest more than 10% stake in a bank. पेंशन की बात की जाए तो पेंशन दी जाती है पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉइज को, और प्राइवेट सेक्टर में कोई किसी भी तरह का कॉन्सेप्ट पेंशन का होता ही नहीं है। एग्जाम्पल अब मैं आपको बताना चाहूंगी तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हुआ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हुआ, इंडियन बैंक हुआ और पंजाब नेशनल बैंक हुआ। प्राइवेट सेक्टर की बात की जाए तो ऑन दी अदर हैंड इट इज आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक एंड कर्नाटका बैंक। ये कुछ एग्जाम्पल है प्राइवेट सेक्टर बैंक। Okay, guys, so now that we have discussed the difference between the private sector and the public sector banks, it is time to discuss something about the Central Bank of India, which is the Reserve Bank of India, which is the RBI. So, guys, the RBI, or you can say the Reserve Bank of India, is India's central bank and a regulatory body which is responsible for regulation of the Indian banking system.
जो सारा सिस्टम है बैंकिंग सिस्टम वो कौन चला रहा है? सीधे सिंपल शब्दों में इट इज आरबीआई. इट इज अंडर द ओनरशिप ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इसके अंडर आता है, विच इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल इशू एंड मेंटेनिंग सप्लाई ऑफ द इंडियन रुपी. Okay, so now let's talk about some of the important factors related to the Central Bank of India. तो सबसे पहले बात की जाए सेंट्रल बैंक, तो इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास. डेप्यूटी गवर्नर कौन है? एम राजेश्वर राव. डेप्यूटी गवर्नर स्वामीनाथन जानकी रमन. ये जो नए हैं ये इनका नाम है. डेप्यूटी गवर्नर जो आपको तीन चार डेप्यूटी गवर्नर के नाम दिए गए हैं जो पहले थे और जो अभी हैं, तो ये नाम आपको ध्यान में रखने हैं. दीज वर द गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक. अब हम बात करते हैं कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक्स के एमडी और सीईओ के बारे में. तो गाइस पहला आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है श्री दिनेश कुमार खरा. उसके बाद आते हैं इलाहाबाद बैंक पर, तो इट इज एस एस मल्लिकार्जुना राव. नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट आंध्र बैंक, तो वो है जे पकिरी सामी. अगला है बैंक ऑफ बड़ौदा. इट इज हंसमुख आधिया हु इज द चेयरमैन. देबदत्ता चंद हु इज द एमडी एंड द सीईओ 2023. फिर आता है बैंक ऑफ इंडिया विच इज रजनीश कर्नाटक and he is the MD and the CEO 2023. Next is Bank of Maharashtra. It is AS Rajiv. And next we have Canara Bank, which is TN Manoharan, who is the chairman, and K Satyanarayana Raju, who is the MD as well as the CEO. नेक्स्ट आता है गाइज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. तो उसके लिए है तपन राय. तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नॉन एक्स चेयरमैन है और मातन वेंकटा राव है हु इज द एमडी एंड द चेयर सीईओ. फिर है कॉर्पोरेशन बैंक पीवी भारती. देना बैंक मर्ज्ड विद बैंक ऑफ बड़ौदा. आईडीबीआई बैंक एम आर कुमार चेयरमैन राकेश शर्मा. इंडियन बैंक शांति लाल जैन. इंडियन ओवरसीज बैंक अजय कुमार श्रीवास्तव. ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स मुकेश कुमार जैन. पंजाब एंड सिंध बैंक इट इज स्वरूप कुमार साहा. पंजाब नेशनल बैंक अतुल कुमार गोयल. Syndicate Bank TN Manoharan, who is the chairman, and LV Prabhakar, who is the MD and the CEO. UCO Bank, it is Ashwani Kumar. Union Bank of India, it is A. Manime Khalai. United Bank of India, it is Ashok Kumar Pradhan. Vijaya Bank, it is R. A. Sankara Narayana. Okay, now let's talk about the private sector banks, CEO and the MD. ओके गाइस, सो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की अगर हम बात करें तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सबसे पहले आता है एक्सिस बैंक, जिसका सीईओ सीएमडी हेड अमिताभ चौधरी इज द एमडी एंड सीईओ, एंड श्री राकेश माखीजा इज द चेयरपर्सन. एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात की जाए तो राज विकास वर्मा इज द चेयरमैन एंड संजय अग्रवाल इज द एमडी एंड द सीईओ. बंधन बैंक, इट इज डॉक्टर अनूप कुमार सिन्हा द चेयरमैन, चंद्रशेखर घोष द एमडी एंड द सीईओ. Capital Small Finance Bank, तो Madan Gopal Sharma is the chairman and Sarvajit Singh Samra, who is the managing director and CEO, and the CFO is Munish Jain. Catholic Syrian Bank, CVR Rajendran, who is the MD and the CEO. City Union Bank, Mr. R. Mohan, who is the chairman, and Dr. N. Kamakodi, who is the MD and the CEO. Next is Development Credit Bank. So Murali M. Natarajan is the MD and the CEO. For Dhanlakshmi Bank, it is J.K. Shivam, who is the CEO and the MD, and G. Subramania Iyer, who is the chairman, and K.N. Madhusudan, who is the part-time chairman. ESAF Small Finance Bank Limited, P.R. Ravi Mohan is the chairman, and K. Paul Thomas is the MD and the CEO. For Federal Bank, it is Shyam Srinivasana, who is the MD and the CEO. HDFC Bank, Atanu Chakrabarti is the chairman, and Shashidhar Jagdishan is the MD and the CEO. For ICICI Bank, Girish Chandra Chaturvedi is the chairperson, and Sandeep Bakshi is MD and CEO. For IDFC, it's Rajiv Lal, who is the non-executive chairman, and V. Vaidyanathan, who is the MD and the CEO. For IndusInd Bank, it's Sumant Kathpalia, who is the MD and the CEO.
For Jammu and Kashmir Bank, it's Baldev Prakash, who is the chairman and the MD. P. Jairama Bhatt, who is the part-time non-executive chairman. Sri Krishna Harihara Sarma, who is the MD and the CEO of Karnataka Bank. For Karur Visya Bank, it is Mr. N.S. Srinath, who is the chairman, and Ramesh Babu, MD and CEO. Shakti Well, the CEO. Kotak Mahindra Bank, Prakash Apte, who is the chairman, Uday Kotak, who is the MD and the CEO. Lakshmi Vilas Bank, so Subramanian Sundar is the MD and the CEO. Nainital Bank, Dinesh Pant is the chairman and the CEO. RBL Bank, it's R. Subramania Kumar, who is the MD and the CEO. Ujjivan Small Finance Bank, it is Neeti Chugh, who is the MD and the CEO. Suryoday Small Finance Bank, Mr. Baskar Babu Ramchandran, who is the MD and the CEO. Krishnan Sankara Subramaniam is the Tamil Nadu Mercantile Bank CEO. Salim Gangadharan, Chairman, and PR Sheshadri, who is the MD and the CEO of South Indian Bank. Prashant Kumar, MD and CEO of Yes Bank. Pralay Mondal, who is the CEO of CSB Bank. Okay, guys, so that was the list of the private sector banks. Now let's talk about the payments bank MD and the CEO. Number one, it's a Airtel Payments Bank. So Anubrata Biswas is the CEO, CMO head. India Post Payments Bank, it's a J Venkatramu. Paytm Payments Bank, it's a Surinder Chawla. Fino Payments Bank, it's a Rishi Gupta. Geo Payments Bank, it's a Shri Krishnan H. NSDL Payments Bank, it's a GV Nageshwara Rao. Now let's talk about some of the small finance banks MD and CEO. AU Small Finance Bank, it's Mr. Sanjay Agarwal. Equitas Small Finance Bank, it's Mr. P.N. Vasudevan. ESAF Small Finance Bank, it's K. Paul Thomas, who is the MD and the CEO. Fincare Small Finance Bank, it's Mr. Rajiv Yadav. Jana Lakshmi Small Finance Bank, it's Mr. Ajay Kanwal. Capital Small Finance Bank, it's First Small Finance Bank, and Mr. Sarvajit Singh Samra is the MD, CEO, CMD. Ujjivan Small Finance Bank, it's Itira Davis. Unity Small Finance Bank Limited, it's Indrajit Kamutra. Utkarsh Small Finance Bank, it's Mr. Govind Singh. Suryoday Small Finance Bank, it's Mr. Baskar Babu Ramchandran. Shivalik Small Finance Bank Limited, it's Suvir Kumar Gupta. And at last, it's Northeast Small Finance Bank, and Ms. Rupali Kalita is the MD of that particular bank. Okay guys, so that was all for today's video. Thank you so much for watching our video. I hope you found this information useful and informative, and if you enjoyed this video, then don't forget to like, share and subscribe to our channel for more such informative content. And if you have any suggestions or a request for future videos, then don't forget to share your thoughts with us and let us know in the comment section down below. Until next time, take care and have a great day.